memorandum of understanding between Dalmia and FL Smith focuses on the next generation of cement technology towards building a sustainable future. The goal is to enable carbon-neutral cement production by 2030, focusing on both energy and process emission. Please. Thank you. The third agreement is exchanged between the Executive Vice President at Larsen & Toubro, Sabajit Depp, and the Director of DI Water, Mads Helleberg Dorf. If I can ask you to come up here. This memorandum of understanding is the first step towards a long-term partnership focused on positively impacts the business environment and the sustainability agenda within the water sector in India. Mr. Buster here. Mr. Depp is very busy today, so he will remain. For the last and fourth agreement, which is exchanged between the Executive Vice President of Larsen & Toubro, Mr. Depp, and the Director of AVK, Niels O. Kjær. And the purpose of this agreement is to strengthen the partnership between Larsen & Toubro and AVK for projects and opportunities specifically within the water and wastewater segments in India and also globally. Thank you very much. That ends the ceremony on agreements. And if I could ask the Prime Minister of Denmark, you have the floor. Thank you so much. And first of all, once again, a very warm welcome to Denmark. His Excellency Prime Minister Modi and I had a very productive meeting today. The relations between our two countries are very strong. Prime Minister, I deeply appreciate this important meeting. We are moving fast in transforming our green strategic partnership into some concrete results. The Indian government has high ambitions for green transition and for making India more independent on fossil fuels. I am very proud that Danish solutions play a key role in realizing these important ambitions. Today, we have agreed on a number of concrete steps on green energy, clean water, and to counter the next global health crisis, just to mention a few examples. Hopefully, the two of us can lead by example by showing that green growth and green transition can go hand in hand. And I am convinced that India and Denmark has a huge untapped potential for trade and investment. We share many values. We are two democratic nations. We both believe in a rule-based international system. And in times as these, we need to build an even stronger bridge between us. As close partners, we, of course, also discussed the war in Ukraine. We discussed the consequences on the horrible crimes committed against civilians and the serious humanitarian crisis in Ukraine. The reports on killings of civilians in Bucha are deeply shocking. We have condemned these killings, and we stress the need for an independent investigation. Denmark and the entire European Union strongly condemn Russia's unlawful and unprovoked invasion of Ukraine. My message is very clear. Putin has got to stop this war and to end the killings. I, of course, hope that India will influence Russia also in this discussion. I now look forward to continuing the discussions between the two of us tomorrow, also with our Nordic colleagues
at the Indo-Nordic Summit 2022. And just to finalize, we have a very strong partnership between our two countries, and we are very grateful that you are in Copenhagen this day. Welcome. Thank you. Your Excellency, Prime Minister of Denmark, डेलीगेशन के सदस्यों, मीडिया के मित्रों, गुड इवनिंग एंड नमस्कार। एक्सेलेंसी, प्राइम मिनिस्टर मेरे और मेरे डेलीगेशन के डेनमार्क में शानदार स्वागत और मेजबानी के लिए आपको और आपकी टीम को हार्दिक धन्यवाद। आपके खूबसूरत देश में यह मेरी पहली यात्रा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में मुझे आपका भारत में स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन दोनों यात्राओं से हम अपने संबंधों में निकटता ला पाए हैं और उन्हें गतिशील बना पाए हैं। हमारे दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं, साथ में हम दोनों की कई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ भी है। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2020 में इंडिया डेनमार्क वर्चुअल समिट के दौरान हमने अपने संबंधों को ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। हमारी आज की चर्चा के दौरान हमने अपने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ज्वाइंट वर्क प्लान की समीक्षा की। मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी, स्वास्थ्य, पोर्ट्स, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी तथा वाटर मैनेजमेंट के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 200 से अधिक डेनिश कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, जैसे पवन ऊर्जा, शिपिंग, कंसल्टेंसी, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, ऐसे कई क्षेत्र हैं। इन्हें भारत में बढ़ते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे व्यापक आर्थिक रिफॉर्म्स का लाभ मिल रहा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कंपनीज और डेनिश पेंशन फंड्स के लिए निवेश के लिए बहुत अवसर है। आज हमने भारत ईयू रिश्तों, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्रों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। हमने क्लाइमेट के क्षेत्र में अपने सहयोग पर भी चर्चा की। भारत ग्लासगो COP26 में लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम आर्किटेक्ट क्षेत्र में सहयोग के अधिक अवसर तलाशने पर सहमत हुए हैं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत और डेनमार्क के संबंध नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे। मैं कल होने वाली सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट की मेजबानी करने के लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं
और आज भारतीय डायस्पोरा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी मैं, क्योंकि आपने वहां आने के लिए समय निकाला, भारतीय समुदाय के प्रति आपका कितना प्यार है इसका ये प्रतीक है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। हेलो, थैंक यू।